Welcome to the channel everyone. Today we are going to talk about powers of company secretary. Company secretary highly critical role play करता है एक कंपनी में. जो कंपनी सेक्रेटरी का रोल है वो कंपनी लॉ डिटरमाइन करता है फॉर द स्मूथनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस of company's business. And after implementing the Companies Act 2013 जो कंपनी सेक्रेटरी का रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है इंडिया में. सम ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कंपनी सेक्रेटरी की है वो हम डिस्कस करेंगे. कंपनी सेक्रेटरी प्राइम कंसल्टेंट होता है जो कि चेयरमैन और डायरेक्टर के जो रोल्स एंड पावर्स होता है वो उनको बताता है. एंड सेकंड है सेक्रेटरियल ऑडिट. कंपनी सेक्रेटरी इंश्योर करता है कि दैट कंपनी फॉलोज द लॉज एंड गाइडलाइंस सेट आउट इन द मेमोरेंडम टू फैसिलिटेट द प्रॉपर फंक्शनिंग of the organization in accordance with the rules set out in section 204 of the Companies Act 2013. So ये एक रोल नहीं बल्कि एक ऑब्लिगेशन है कंपनी सेक्रेटरी का टू परफॉर्म सच ऑडिट्स ऑन मैंडेटरी एंड रजिस्टर्ड कंपनीज. एंड थर्ड वन इज़ कंपनी लीगल काउंसिल. कंपनी सेक्रेटरी एज अ लीगल एडवाइज़र काम करता है मैनेजर्स के लिए. एंड जो कॉम्प्लेक्स लॉज होते हैं लीगल इश्यूज़ पे उन पे वो एडवाइस करता है मैनेजर्स को. इन एडिशन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर CS टू कंसिडर द फॉलोइंग लीगल एस्पेक्ट्स. Filing of annual returns and forms in accordance with the Companies Act. चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को असिस्ट करता है in implementing certain policies effectively. Company secretary reviews the legal requirements for the relevant certificate sharing devices, regulate the dividend flow in accordance with the laws followed by the company. And fourth is inter and intra-company working relations. कंपनी सेक्रेटरी एज अ लाइजन रोल प्ले करता है बिटवीन इन्वेस्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अथॉरिटीज़ वर्किंग टूवर्ड्स द फंक्शनिंग एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी. फिफ्थ वन इज़ रिकॉर्ड लीगल वर्क. थिंक कंपनी सेक्रेटरी जो इंफॉर्मेशन होती है अबाउट इन्वेस्टर्स, शेयर्स, डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स की उसकी एक फ़ाइल मेंटेन करके रखता है. एंड सिक्स वन इज़ बिजनेस प्लानिंग. एंड कंपनी सेक्रेटरी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स, board of directors of company, and the articles of the company will address the primary needs of shareholders and board of directors meetings, but the law firm's secretary is responsible for disclosure, compliance, any establishment or review of records. Seventh one is maintaining company records. The company secretary control the retention of certain company records even if this is not required by law. These obligations include pension and insurance detail, VAT registration, pay information, tax record and accountancy, statutory compliance records. Eighth one is command over corporate governance. Corporate governance. In India, the company secretary advises the board of directors on company governance matters and the responsibilities of board of directors. So this includes managing areas of shareholding interests, conflicts of interest, investor advice, and working with applicable codes. And an important fact is to hire a CFO and a CEO. Companies need to appoint a company secretary, and this illustrates the importance of CS